दृष्टि और मैं हूं क्रिश एंड वी वेलकम यू टू येट अनदर मैच ऑफ माइंडवाश लीग 2021। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं लीग के बीच में अचानक से कैसे आ गया। वेल, जो मेरा दोस्त है ना विराज, वो अब इस लीग में पार्ट नहीं ले पाएगा, तो अब उसकी जगह मैं आ गया। और तू विराज की जगह खेलेगा? हाँ, और के सारे पॉइंट्स अब मेरे हुए। हाउ कूल। चल आगे बढ़ते हैं। आप सभी को तो पता ही है कि माइंडवाश लीग के 10 मैचेस हो चुके हैं। 6 players, 15 matches, and the 4 highest scorers move to the next stage to be the champion of the Mindwars League 2021। तो मेरा टोटल स्कोर है 18। तो मेरा तो सेमीज तक जाना काफी इजी लग रहा है। तो आज का टॉपिक भी हमने हमारी पसंद के हिसाब से चूज किया है। हाँ, क्योंकि हम दोनों को ट्रैवलिंग और हिस्ट्री दोनों सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वी न्यू व्हाट टॉपिक वी हैव टू चैलेंज ईच अदर ऑन। यस, सो आज का टॉपिक है इंडियन यूनेस्को साइट्स। सो लेट मी आस्क यू दृष्टि, how many Indian UNESCO sites you have been to? Me, let me think. Maharashtra में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, then Victorian Art Deco symbol, then of course CSMT station, then दिल्ली में रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, then कुतुब मीनार. So total 8 and you? I have also been to CSMT station और फिर आगरा में ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, आसाम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क। So that's total 6 UNESCO sites. Wow, you have gone to काजीरंगा नेशनल पार्क? वहाँ तो मुझे हमेशा से जाना था, especially to see one on rhinoceros. मैंने वहाँ इतने सारे देखे ना दृष्टि, what a sight it was. Oh, and by the way, तुझे पता है काजीरंगा नेशनल पार्क कैसे बना? It's a damn interesting story. All is up for the stories. Tell. In 1904, जब इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड कुर्जॉन थे, तब his wife wanted to go to काजीरंगा to see the great one-horned rhinoceros. But unfortunately कह लो या unfortunately, उनको वहाँ एक भी राइनो नहीं दिखा, and she complained about it to the viceroy. तब जाके लॉर्ड कुर्जॉन ने सजेस्ट किया कि काजीरंगा को एक रिजर्व में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा for the protection and preservation of the great one-horned rhinoceros. All thanks to them, currently वर्ल्ड के 2/3 ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस आज काजीरंगा नेशनल पार्क में है। वाह, व्हाट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहली बार सुन रही हूँ कि बीवी की कंप्लेंट से दुनिया को इतना बड़ा फायदा हुआ। पर मेरे पापा तो मेरी मम्मी की बिल्कुल नहीं सुनते। अगर सुनते ना तो मुंबई में कितने सारे डायमंड म्यूजियम बन चुके होते। सो विदाउट फर्दर अडू क्विज शुरू करें। लेट द माइंडवाश बिगिन। Okay guys, so it's my first match. I hope I score better than Drishti. Question 1. What is the name of the world's largest stone sundial present in Jantar Mantar, Jaipur, which is an astronomical observation site? Samrat Yantra? Yes. Question number 2. Which is the first among the 3 railways which come under Mountain Railways of India to acquire World Heritage status in 1999? Darjeeling Himalayan Railway. Yes. Question number 3. Which hill fort located in Aravalli Hills in Rajasthan has the longest continuous wall in the world after the Great Wall of China? I know this. It's B. Kumbhalgarh Fort. Did you know the Kumbhalgarh Fort has a perimeter wall that extends up to 36 kilometers, that is 22 miles, making it the second longest wall after the Great Wall of China. Question number 4. Which Indian emperor built the Mahabodhi temple to mark the holy site where Siddharth Gautam attained enlightenment? Ashok. Yes. Question number 5. In which state are the rock shelters of Bhimbetka, which got their name from Bhim the Pandav, located at? Madhya Pradesh. Yes. Question number 6. The Elephanta Caves near Mumbai, which have a total of 7 caves, are dedicated to which Hindu deity? It's Shiv. Yes. Question number 7. Which dynasty built the Rani Ki Vav on the banks of Saraswati River at Gujarat? Solanki dynasty. Yes. Question number 8. Who built the Red Fort of Agra? Akbar. Yes, I'm going right. Question number 9. Who takes care of Ellora caves?
Ministry of Tourism. Question number 10. Out of the following, which Indian UNESCO site is not found on any Indian currency note? Taj Mahal? Yes. Did you know? The Sun Temple is found on 10 rupees note, Ellora Caves on 20 rupees note, Stone Chariot of Hampi on 50 rupees note, Rani Ki Vav on 100 rupees note, Sanchi Stupa on 200 rupees note, and Red Fort on 500 rupees note. I scored 9 on 10. Yes. दृष्टि भी इतनी कर पाएगी मुझे. Let's start the quiz. Question number 1. Which of the following cities entered the Indian list of UNESCO World Heritage Sites in the cultural category? C. Jaipur? Yes. आपको पता है जयपुर entered the list of UNESCO World Heritage Sites in 2019. Apart from Jaipur, the only other Indian city entered the UNESCO World Sites is Ahmedabad in 2017. Okay, question 2. What does the Sanskrit word Kona, which is a part of the name of the Konark Sun Temple, mean? C. Angle. Yes! Question number 3. Which city in Gujarat is India's first World Heritage City containing numerous mosques along with Hindu and Jain temples? C. Ahmedabad. Yes! Question number 4. Which of the following caves is not present in the group of monuments present at Mahabalipuram? I think so. A. Badami Cave. Yes! 5. Which national park in Assam has the highest density of tigers in the world? D. Kaziranga. Yes. Did you know the density of tigers at Kaziranga Park is 32.64 tigers at per 100 square kilometers? It is the highest known in any tiger habitat. 6. Which mountain range in India, also known as Sahyadri Hills, is one among the world's top 8 ecology hotspots? I think so. A. Eastern Ghats. Question number 7. Who rebuilt and christened the original brick fort of Badalgarh with red sandstone using 4,000 builders over a span of 8 years? C. Akbar. Yes. 8. Name the only UNESCO World Heritage Site in India that comes under the mixed category by fulfilling both natural and cultural heritage. B. Ellora Caves. Question 9. Which is the largest church in Asia that is one among the churches and convents of Goa of UNESCO World Heritage Sites? I think so. A. Santa Cruz Church. 10. Where is the UNESCO Natural World Heritage Site Valley of Flowers located? C. Mysore. I got 6 out of 10. I hope Chris के इससे कम हो. I got 9 points. And you? Huh? You got 9 points. How is it possible? I got 6. See, even though तू मुझसे ज़्यादा यूनेस्को साइट्स घूमी है, जीता तो मैं ही हूँ. हाँ मुझे पता है तुम चीटिंग कर रहे हो. एक सेकंड. कंप्लेंट बाद में करना हाँ, फुर्सत में. पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं. सी, लीडर बोर्ड पे तो मैं टॉप कर रहा हूँ. हाँ तुम्हें मैं देख लूंगी. ये तो बस मुझे एक रियलिटी चेक मिल गया. अब मैं माइंडवर्स पे प्रैक्टिस करूंगी. और अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो लॉग इन कीजिए ज़ी5 ऐप पर और खेलिए माइंडवर्स. एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस लीग जस्ट लाइक अस, write to us on contact@mindverse.co.in. Bye. Want to be first one to know of these videos on Mindverse YouTube channel? Hit the subscribe button and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about our video.